So we will be solving this question 59 of JEE Advanced 2012 paper 1. So this question says if A vector, B vector and C vector are unit vector satisfying mod of A minus B vector का square plus mod of B minus C vector का square plus mod of C vector minus A vector का square equal to 9. Then we have to find the value of mod of 2A vector plus 5B vector plus 5C vector. This we have to find. So इसे हम ओपन कर देते हैं. This will be mod A का square plus mod B का square minus 2A dot B plus mod B का square plus mod C का square minus 2B dot C plus mod C का square plus mod A का square minus 2A dot C equal to 9. इसका मतलब क्या हो गया? Since A vector, B vector, C vector are unit vectors, so mod A equal to mod B equal to mod C equal to 1, which implies that minus 2 A dot B plus B dot C plus C dot A equal to 9 minus 6, which is 3, which implies that A dot B plus B dot C plus C dot A equal to minus 3/2. ठीक है. अब यहाँ पे आप कंसिडर करिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, जहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों यूनिट वेक्टर हैं, इसके मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ सकती है. ठीक है. सो मॉड स्क्वायर इक्वल टू mod of a vector plus b vector plus c vector का स्क्वायर इक्वल टू mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर प्लस mod c स्क्वायर प्लस 2 a dot b plus b dot c plus c dot a. So this will be 3 plus 2 a dot b plus b dot c plus c dot a. Now mod a vector plus b vector plus c vector का square should be greater than equal to 0, which implies that 3 plus 2 a dot b, बेसिकली हम ये a dot b plus b dot c plus c dot a में का कुछ हम रिलेशन टाइप का निकाल रहे हैं, is greater than equal to 0, which implies that a dot b plus b dot c plus c dot a is greater than equal to minus 3/2. और यहाँ पे हमारा क्या है, a dot b plus b dot c plus c dot a equal to minus 3/2 आ गया है, which implies that mod a vector plus b vector plus c vector का स्क्वायर इक्वल टू 3 plus 2 into minus 3/2, which implies that mod a vector plus b vector plus c vector का स्क्वायर इक्वल टू 0, which implies that a vector plus b vector plus c vector equal to 0. Now we have to find the value of mod 2a plus 5b plus 5c. Mod 2a vector plus 5b vector plus 5c vector. So this is equal to mod of 2a vector plus 5b plus c vector, which is equal to mod of 2a vector plus 5 minus a vector, which is equal to 2a vector minus 5a vector, which is equal to mod of minus 3a vector, which is equal to 3 mod of a vector, which is 3 into 1, since a vector is a unit vector. So value of mod 2a vector plus 5b vector plus 5c vector will be equal to 3. So 3 is the correct answer for this question.